Hello and welcome back Hello. to Chasing the Target. It's been not an eventful day in terms of sporting action, like in terms of news. काफी खबर आ रही है from the sporting world. The first information we got सुबह सुबह उठ के Lucknow Super Giants, they have been, they have confirmed from the sources that they're going to retain three players. One is Mayank Yadav, one is Nicholas Pooran, and the other one is Ravi Bishnoi. उसका मतलब ये है कि KL Rahul won't be retained. Again, this is from sources, but these are very legit sources because ESPN Cricinfo is also reporting this. So ये खबर काफी पक्की दिख रही है मेरे को. Unless there's some last minute thing, KL Rahul will not be retained. Right to match कर सकते हैं उसको, लेकिन it looks like he's going into the auction and he'll probably play for a new franchise. खबर ये भी आई कि फुटबॉल वर्ल्ड में मैनचेस्टर यूनाइटेड का जो मैनेजर टेन हाग, he's been sacked. That's big news as well. So we've got a lot of news today. So we will discuss. I have with me Mr. Mogs. Mogs, हम लोग केएल राहुल के बारे में इतना बात कर रहे थे, बेचारे को टीम से भी ड्रॉप कर दिया, अभी उन्हें लखनऊ वाले भी कट मार दिया उसको. But maybe it's the best for him if he goes into the auction, if he gets a good sum, maybe goes to RCB, जहाँ उसका hometown Bangalore. If he goes back to Karnataka, it might help him over there. What are your initial thoughts looking at this news? He has to change his jersey's number, bro. Number 4 is like Panoti for him right now. So जो भी आएगा नंबर 4 पे क्या करेगा, नंबर 4 पे क्या करेगा, that's what ये चल रहा था पूरा. तो उस हिसाब से ये इम्पैक्ट पड़ गया आईपीएल पे भी उसको. बड़ा धक्का है ये. आई थिंक हाँ बिल्कुल. मतलब अब आई डोंट नो उसको उन्हें भी रिटेन होना चाह रहा है या नहीं होना चाह रहा, बिकॉज मोक्स अगर आपको याद है हम लोग साथ में मैच देखे थे, हैदराबाद वर्सेस लखनऊ, यहाँ पे मैच हुआ था. और फिर आपको याद है जो ओनर झाड़ा उसको मैच के बाद, आई थिंक वहां पे जो रिलेशनशिप होती है, जितना भी आप बाद में मेंट करने जाओ, ये जब आप क्या बोल रहे, जब भी सोच लिया था कि नहीं लूंगा नहीं. और उन्हें भी बोला होगा भाई मैं कहीं को रिटेन हूं बोल के. एलएसजी आल्सो रिटेनिंग मोहसिन खान, आयुष बदोनी एज द uncapped picks. So I think 4 करोड़ में उन लोग को भी करेंगे. Yes, you are right over there. Mohsin Khan, I think good shout. 4 करोड़ में अगर आएगा, again it depends on his fitness, but I think it's a decent shout. That means उन लोग 5 रिटेन करेंगे, उनके पास एक right to match होगा. They can still play that right to match on Mr. KL Rahul, but it looks unlikely because of whatever has happened. I don't think उसके इस तरीके के अभी से जो न्यूज़ेस आ रहे, I don't think they'll right to match KL Rahul, क्योंकि जिस तरीके पहले से I think last IPL से ये लोग बहुत वो हो गए थे, right? I don't, वो लोग नहीं करेंगे शायद अभी तो. Yeah, बिल्कुल. And मेरे को भी ऐसे ही लग रहा कि उन्हें नहीं आएगा. Now if you look at the retentions, Nicholas Pooran, what do you think which team will take KL Rahul? I think Bangalore, RCB. मेरे को ऐसा लग रहा है because उन्हें है Bangalore का, which is very close, and Karnataka का he's played for RCB before, and उन लोग भी कप्तान ढूंढ रहे. They might make him captain, local boy, marketing strategy भी हो सकती है. कुछ भी हो सकता है. अब KL Rahul जाके RCB में ये टाइप IPL जीता दिया तो भाई मतलब क्रेजी हो जाएगा वो. बट ये भी देखना, देखो उन्हें इंडियन टीम से भी ड्रॉप हो गया टेस्ट मैचेस में. आई मीन 11 से स्क्वाड में तो है उन्हें गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया, बट ही डिडंट प्ले द सेकंड टेस्ट मैच इन पुणे. एंड अब ये देखना पड़ेगा, इवन व्हेन ही गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू प्ले, ही विल हैव टू स्कोर सम रन सो दैट ऑक्शन में उसका प्राइस भी और ज्यादा जाए. आई थिंक डिमांड तो रहेगा बिकॉज देखो उन्हें विकेट कीपर भी है मोक्स, उन्हें कप्तानी भी कर सकता है, उन्हें ओपनिंग बैट्समैन भी, तो लाइक आई थिंक पीपल विल डेफिनेटली गो फॉर. समटाइम्स प्रॉब्लम होता है भाई, ऊपर नीचे होता परफॉर्मेंस में ये वो, बट दैट डजंट मीन कि उन्हें नहीं कर सकता. लाइक विकेट कीपिंग भी अच्छा है. अब जो भी लिया उसको तो बेनिफिट्स है, विकेट कीपर भी मिल गया आपको, बैट्समैन भी मिल गया, कैप्टन भी मिल गया. तो आपके पास लाइक काफी यूटिलिटी प्लेयर है, राइट? आपके पास काफी ऑप्शंस उसके साथ यूज कर सकते हैं आप. एंड अगर आप हम लोग उनके 3 रिटेंशंस देखें, पहले निकोलस पूरन, आई थिंक ही इज द सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर आफ्टर केएल राहुल. ही इज लास्ट 2 सीजंस बहुत काफी अच्छा खेला उन्हें. यस, he's been in the IPL for a long time, he has a lot of experience. उतना कंसिस्टेंसी नहीं दिखा, बट लखनऊ में उन्हें अच्छा खेल रहा. आप देखे थे, आप मैच गए थे उप्पल में जहाँ पे निकोलस पूरन फोड़ दिया था 2 साल पहले, अगर आपको याद है. तो ही इज अ fiery character himself. He can be a captain option. उन्हें भी विकेट कीपर है, so that's someone they've retained. And Nicholas Pooran वेस्ट इंडीज के लिए भी अच्छा कर रहा है उन्हें, like internationally as well, so he's a good option. Then you go to Mayank Yadav, fast bowler, 150 मतलब 150 की स्पीड से अगर डाल रहा, he's a good option of course. And then Ravi Bishnoi, I think spinner, बहुत अच्छा quality spinner है, he's done well in the IPL, so I think 3 good picks. आपके तो बहुत जबरदस्त मजा आने वाला है ना IPL का. ये 100% पहले तो ऑक्शन का मजा लेना है, पहले रिटेंशन का मजा लेना, फिर ऑक्शन का, फिर उसके बाद IPL का मजा लेंगे. मालूम होगा कि कौन किस-किसके पत्ते कट रहे. मैं आपको बोल रहा हूँ, I think the auction will be more exciting than IPL itself मेरे लिए, because I like the dynamics, calculate करना है, इन्हें कहाँ जा रहा है, इन्हें किधर जा रहा है, अरे इन्हें इतने पैसे में चले जा रहा. तो आई थिंक इट बी वेरी एक्साइटिंग. अपने साथ कार्तिक भाई भी जुड़े हैं, इब्राहिम भाई भी है. इब्राहिम भाई का एक कमेंट लेता हूं मैं. गैरी कर्शन रिजाइंड एज पाकिस्तान व्हाइट बॉल कोच.
Gillespie is interim coach for Australia series, and Saqlain Mushtaq is heavy favorite to return as Pakistan coach, with Gillespie likely to resign soon. I forgot about that. That was also the news. Ten Hag has been sacked. Gary Kirshner has resigned, and Lucknow is retained. From sources, they're retaining 3 players, and KL Rahul is not one of them. Saqlain, देखो पाकिस्तान का भाई मेरे को समझ में एक मेरे को अच्छी चीज नहीं दिखी. उन लोग सीरीज जीत गए, ठीक है. वहां पे पोस्ट मैच में पीसीबी का चैनल जो है उन लोग वो कर रहे थे, राइट, लाइक इंटरव्यू. तो शान मसूद कैप्टन ने उसको बुलाए. वहां पे जैनब अब्बास होस्ट थी, उन्हें सवाल पूछी, ठीक है. बीच में रमीज राजा साहब काट दिए और बोले कि हाउ 6 मैच कैसा हार गए तुम पहले. भाई अभी आप सीरीज जीते इंग्लैंड के अगेंस्ट और आप ऐसा बोल रहे 6 मैच, हाउ पीछे की बात और इतना सार्कास्टिक हंसना शुरू करा. हाउ डिड यू मैनेज टू लूज 6 मैच, हां बोल के ऐसा शुरू कर दिया उन्हें. मेरे को वो बात समझ में नहीं है. पाकिस्तान में कोई बॉन्डिंग नहीं है, एक दूसरे के लिए खुश नहीं है. लाइक यू नो इट जस्ट सीम्स लाइक अरे बाबर नहीं था तो खुश नहीं है लोग सीरीज जीते. तो व्हाट इज दैट स्टुपिडिटी ब्रो. जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे जब तो ये बाबर का चल रहा था, राइट, और फ्लैट विकेट्स आप कुछ भी नहीं जीते. मैचेस हारे तो प्रॉब्लम नहीं है, बाबर रहना जरूरी है. I think that was absolutely pathetic, and Gary Kirshner इसलिए रिजाइन कर दिया होगा. उन्हें भाई देखो वर्ल्ड कप जीता इंडिया के साथ, उन्हें बड़ा कोच है. अब ये सब पॉलिटिक्स देख के and it's so sad कि ये खबर आ रही है आफ्टर अ सीरीज विक्ट्री, जहां पे आपको विक्ट्री मिल रही नहीं थी. कहीं भी यूएस से भी आप नहीं जीत रहे थे और आप यहाँ पे इंग्लैंड को हरा दी जो अच्छी टीम है. एंड यू नो आपका जो वाइट बॉल कोच है उन्हें भाई बोला खुदाफिज, आई डोंट वांट टू प्ले, आई एम नॉट गोइंग टू. चलो भाई अगर ये सीरीज भी हार दे तो उन्हें बोला तो कुछ समझ में आता था, राइट. ठीक है, उन्हें वाइट बॉल को चाहिए तो सीरीज उससे रेलेवेंट भी नहीं था. उन्हें गिलेस्पी था, इन्हें तो रेलेवेंट ही नहीं था. कॉर्नर he wants to do this, that's the reason he did it. There's politics, you know, everyone, no one's happy with each other. अब ये भी हो सकता है मोक्स कंस्पिरेसी थ्योरी, मेरा ओपिनियन, कि रिजवान को कप्तान बनाया, उन्हें फिर बाबर इन लोगों को लेके आ गया. Maybe Gary Kirshner didn't want Babar and these guys in the white ball team, right? Because Gillespie worked without Babar in the red ball team. जीत गए लोग 2 मैच और सीरीज जीत गए. So maybe he didn't want, maybe he wanted to pick his team. Maybe उसको नहीं दे रहे थे चांस. Maybe रिजवान बोला कि भाई नहीं बाबर खेलेगा, शाहीन भी खेलेंगे, नसीम भी खेलेगा. तो ये भी हो सकता. KL Rahul, RCB would be disastrous. In RCB would be disastrous. RCB fans will be harsher on him than Indian cricket team fans. I think look, it all depends on what KL Rahul shows up, right? If it's the KL Rahul who plays aggressive brand of cricket, if he's scoring runs, if he's the orange cap holder, then I think they will go be behind him because he is a local boy as well. But yes, if it is the KL Rahul where, you know, 30 of 35, 30 of 40, strike rate of 80, 90, then of course they will not appreciate that. I think no franchise will appreciate that. But RCB is a sort of franchise, even if the 10th place, you see the Chinnaswamy is full. So I think if there is a place for him to flourish, I think it is RCB. I understand they might be harsh, I think, but any fan base will be harsh अगर आप performance नहीं दे रहे. हम लोग कितना harsh थे जब Sunrisers 10th थे, right? So I think RCB is still a decent option for him as compared to other teams. Remember, Ramiz Raja said, I adore Babar Azam and I will marry him. Perhaps he was hurt by the mission of his sweetheart. यार मगर ऐसा आप प्रोफेशनल है, कमेंटेटर है, आप एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे मोक्स आप शादी की बात कर रहे हैं. आप ऐसा जो कप्तान जीता आप उसकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं वो हंस के और ये करके. It is absolutely BS, bro. Like how can you behave like that? Like बीवी के बारे में गलत बोल दिया तो रमीज राजा पलटा के दे दिया. Like what is that kind of thing? आप वो होस्ट को काट रहे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो सवाल पूछ रही है जैनब अब्बास, आप उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं. बट मोर इम्पोर्टेंटली आप कप्तान को डिसरिस्पेक्ट कर रहे जो अभी जीता सीरीज, राइट? सो लाइक उन्हें भी शॉक में आ गई. उन्हें बोले कि भाई इन्हें ककू बोल रहा है, नहीं बोलिए वैसा, बट लाइक शी वाज प्रॉब्ली शॉक्ड इनसाइड. व्हाई द हेल इज ही, लाइक यू नो, शी इज ट्राइंग टू आस्क हिम अ क्वेश्चन एंड एवरीथिंग, एंड she will also feel bad now because उन्हें छेड़ी वो बात 6 लॉसेस की, but she didn't, उसका इंटेंशन वो नहीं था. उन्हें बोलना है चाहिए कि इतना हारे फिर then they won, फिर आपका रिएक्शन क्या है? उन्हें उसमें पकड़ के बोला कि भाई हाउ 6 हारे, कैसा हारे यारो. अरे जाने दो, हार गए अब जीते. उन्होंने नहीं गॉट इज पॉइंट कि वो 6 हारे बोलना है. शान मसूद बोल रहा है रमीज भाई देखो लाइक एटलीस्ट हम लोग ये जीत गए, हम अपना ये था ये वो. ही इज ट्राइंग टू लाइक ब्रश इट ऑफ. मगर Ramiz Raja has received a showcase notice and PCB have requested broadcaster to consider not hiring him for future commentary. I mean 100% like ऐसा आप behave करेंगे. Aggressive बोलता आप भी aggressive लियो फिर पलटा के. या मगर भाई आप अगर हारे सीरीज और आप ये सवाल उठाए जैसा गंगुली करा राहुल द्रविड़ के साथ WTC फाइनल के बाद, मैं था वहां पे मौजूद लंदन में. गंगुली झाड़ा द्रविड़ को, भाई ऐसा क्यों करे, ऐसा प्रिपेयर नहीं करे. वो ठीक है बिकॉज आप मैच हारे. यहाँ पे आप सीरीज जीते और आप यू नो जस्ट बिकॉज आपका लाडला नहीं था टीम में, आप बोल रहे हैं कि लाइक कैसा हार गए 6. भाई इसलिए हार रहे बिकॉज बाबर आजम था टीम में. वो उन्हें पलटा के ऐसा बोला तो शान मसूद अगर पलटा के ऐसा बोला तो सही बात है. और जैनब भी अंदर सोच लेंगे क्या है
हाँ Why she's like रवि why राज what don't क्या बोलते पॉलिटिक्स मेरे सामने मत लेके आओ क्या सोच लियो क्या ना Ramiz Raja on air while doing commentary when asked about pitch during his tenure as chairman, he put all the blame on Babar Azam. Yeah, man, look, this guy is जहाँ पे भजन वहीं पे वजन जहाँ पे वजन वहीं पे भजन. Like he's like that, bro. Like I don't understand his thought process, the what he's saying, his questions. It is absolutely crap. रमेश अपने दिल का राजा दिख रहा हूँ जो दिल में बोल रहा हाँ, ये याद है वो डैन क्रिश्चियन को कैसा ट्रीट किया गया इन 2021. वो दोबारा खेला नहीं आया. आरसीबी फैंस मोर रूथलेस कंपेयर टू आईसीटी फैंस. वहां एलएसजी एंड पंजाब में बच गया था बिकॉज़ नॉट स्ट्रांग फैन बेस. या लुक आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम बट एट द सेम टाइम अगर आप देखो लाइक आरसीबी जो अगर आप परफॉर्म करे फिर उन लोग वो ही आसमान पे पहुंचा देते. सो इट इज दैट गिव एंड टेक काइंड ऑफ थिंग. बट आई थिंक स्टिल look Dan Christian and all that, look I don't know, like, you know, if it was that crazy, it was they ruined his career or anything. We've also had players, you know, who've come in like Vijay Shankar and this and that. We have a strong base. We said a lot about him, so that is going to happen in every fan base. हम लोग भी पीछे पड़ गए थे विजय शंकर मनीष पांडे के. कार्तिक is saying but RCB fans नहीं छोड़ेंगे if there is a little bit of mistake. मतलब को अभी केएल राहुल को भाई कोई भी नहीं छोड़ रहा. हाँ. It all depends on the and player. he needs that भाई कोई भी नहीं छोड़ना तो परफॉर्मेंस आएगा. अगर उन्हें सनराइजर्स है आप समझ रहे हम छोड़ेंगे. आप समझ रहे फैज छोड़ेगा. फैज तो हाथ धो के पीछे लाइक केएल राहुल के राइट. हाथ धो के कब मिला तो कब क्या करेंगे. कोई भी नहीं छोड़ेगा उसको. केएल राहुल इटसेल्फ wherever he goes कोई भी नहीं छोड़ेगा उसको. and it is good for KL Rahul also कि अगर उन्हें वहां पे नहीं छोड़ेंगे तो परफॉर्मेंस आप निकालेगा. मेरे को ये बताओ मुंबई इंडियंस गया तो क्या होगा. वही हशर होगा उसका. चेन्नई गया तो वही हशर होगा अगर उन्हें परफॉर्मेंस बस से बस क्या होगा हार्दिक पांड्या का एटलीस्ट उन्हें घर चला सकता. बैंगलोर में वही है करीब. हाँ बस से बस क्या सिचुएशन होगा हार्दिक पांड्या के साथ उसने वो तो नेक्स्ट लेवल था. केएल राहुल बेचारा उतना हाई परफॉर्मेंस पे दे रहे उसको. Gary Krishnan was not happy with squad selection for ODI team against Australia and Zimbabwe as he wanted to select a certain lot of players so he can focus on building. Yes, that's what I'm saying. Like I completely agree with that. He probably didn't want these guys in the team like Babar and Shaheen or whatever. Like maybe he wanted a certain group and he wanted to build a team accordingly. And Rizwan was made captain by the selectors and Rizwan बोला कि भाई मेरे को बाबर होना. I'm sure that's what happened and खत्म. हर कोई बाबर होना बोल रहा है यार. क्या सीन है यार ये समझ. वहां पे पॉलिटिक्स तो अलग लेवल के. भाई आप अभी सीरीज जीते सेलिब्रेट करो. इंस्टेड ये सब पॉलिटिक्स चल रहे हैं. इट्स वेरी पोर मैन. इट हैपेंस इन द सबकॉन्टिनेंट. इट हैपेंस इन इंडिया टू बी फेयर. सो या लाइक तो ये खबर आई लखनऊ का दैट दिस बीन मोस्ट लाइकली दे विल रिटेन 3 प्लेयर्स प्लस 2 who are uncapped. So आपके मयंक यादव हो गए, आपके रवि बिश्नोई हो गए, निकोलस पूरन हो गए, मोहसिन खान हो गए और चौथा जो है आपके आयुष बदोनी हो गए. What do you guys want, Faf or KL Rahul as captain? Faf recently won CPL while KL Rahul coming from massive criticism. आप कौन लेंगे कप्तान? फाफ किसी जो प्लेऑफ में पहुंचा है आरसीबी को और जो जीता CPL, लेकिन his age is 40 now. Close to 40, 39, 40 का उन्हें. So it won't be a long term thing. I think if or you go KL Rahul 31, 32. He has a few years in him. He's local boy, Indian talent. So look, if you look at from just captaincy perspective, Faf du Plessis, I would always take him, but I have to consider the age. मैं ये बोलता हूँ कि KL Rahul को देना पड़ेगा चांस because KL Rahul कैप्टेंसी करेगा तो परफॉर्मेंस निकालेगा इन बैटिंग एंड विकेट कीपिंग आल्सो बिकॉज़ जो रिस्पांसिबिलिटी बिकॉज़ विराट कोहली का हाथ रहेगा पीछे. दैट इज यू आर वेरी इंपॉर्टेंट विद दैट. आपके हिसाब से सिराज दैट इज व्हाई इज डन वेल राइट. या दैट्स ट्रू. बट यहां पे क्या है बोलो तो आपको जो चीज का एक्सपीरियंस होना है इट विल गेट फ्रॉम कोहली. ओके पीछे से देन ये क्या है परफॉर्मेंस बैटिंग विकेट कीपिंग एंड कैप्टेंसी. ये 3 चीज की जब रिस्पांसिबिलिटी आप केएल राहुल पे डालेंगे देन उन्हें कुछ कर सकेगा. अदरवाइज खाली उसको बैटिंग दे देंगे तो आई डोंट थिंक he'll perform very well. I think again you know Virat Kohli is an option but फिर आप पीछे जा रहे हैं राइट. उन्हें छोड़ दिया कप्तानी. he's gone through not Virat Kohli. नहीं मैं बोल रहा हूँ खुद से बोल रहा हूँ. No, I agree with you. I'm saying कोई चीजों में प्रॉब्लम आया तो आई थिंक no you're saying instead of going to Virat Kohli as captain or Faf du Plessis जो already कप्तानी कर चुके हैं go with a new captain and उन लोग उसके पास बैकिंग है कोहली और लोगों का. And why they'll have to make a decision quick because the thing is one disadvantage will be that अगर KL Rahul को लिए right उन लोग they won't have a captain in that auction. जैसा अगर पैट कमिंस रिटेन हो गया
Pat Cummins will be engaged in that, involved in that auction. Yeah, अगर उन्हें present है या नहीं है, he'll be involved in that तो auction. उसको निकाल के कैसे सीधा ले सकते नहीं, फिर उन्हें इन्फ्लुएंस करेंगे आप प्लेयर्स का, राइट? Yes, yes. मगर यहाँ पे आरसीबी, पंजाब, अगर उनके पास कप्तान नहीं है ना, तो फिर उन लोगों को मुश्किल यही होगा कि भाई लाइक प्लेयर्स तो उठा लेंगे, फिर कप्तान अलग से बनाना पड़ेगा, फिर कप्तान बोलेगा भाई मेरे को ये प्लेयर नहीं होना था, तो वहां पे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है. नॉट नेसेसरली ट्रू, बट इट कैन हैपन. That's what I think as well. And Mooks, there is also सनराइजर्स का ऐसा दिख रहा कि क्लास एंड पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ये तीन को रिटेन करेंगे और नीतीश रेड्डी को शायद राइट टू मैच करेंगे. मगर उसका मसला ये है कि ट्रेविस हेड माइट नॉट बी अ सनराइजर प्लेयर. देन ट्रेविस हेड वाज अ गुड प्लेयर, मैन. वो जबरदस्त प्लेयर था. We need him, bro. We need him, but like we'll see what is going on, what's cooking there. I'm following Just Head, so I'll just see what's going on there. Are they ready? Pat Cummins Ashes में available नहीं रहेगा, I guess. When is the Ashes in England? I think the next Ashes is in Australia, bro, because England का अभी last year हुआ था, तो I think next winter होगा मेरे हिसाब से. I think next winter होगा, so 2025 December. That's what I think is the next Ashes in Australia. In England, it'll be in 2027, if I'm not mistaken. I mean, Ashes year में IPL में ही नहीं होगा भाई. हो सकता, मगर आई थिंक उन लोगों के लिए अभी इंडिया की सीरीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर उन्हें अब ये आईपीएल तो खेल लिया, नेक्स्ट आईपीएल भी अगर खेल लिया तो आई थिंक. बट यस, लुक, कमिंस का ये है कि इंजरी कभी भी हो सकती है. फास्ट बॉलर है, ही इज ऑलरेडी 31, ही कैन हैव इश्यूज, सो यू विल हैव टू टेक दैट रिस्क. मगर आई थिंक द फैक्ट उन्हें जिस तरीके से कप्तानी करा ये साल, एकदम से आके हां, जो एग्रेसिव जिस तरीके से क्रिकेट खेले, दैट्स व्हाई दे ऑन दैट बेसिस दे वांट टू रिटेन हिम. Even everyone was appreciating with their नहीं, लास्ट वाला भाई इंग्लैंड में हुआ था अभी लास्ट ईयर 2023 में. उससे पहले 2022 दिसंबर में शायद हुआ था ऑस्ट्रेलिया में. नहीं, 2022 नहीं, 2021 दिसंबर में शायद हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, जहां पे आपको याद है बोलेंड आके 5-5 विकेट ले रहा था. वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था. फिर लास्ट अभी इंग्लैंड में हुआ था, अभी नेक्स्ट ऑस्ट्रेलिया में. So that's the thing, Mooks. Pat Cummins, I think that's why they'll retain him. Risk है because you know he can be injury prone. He has a huge 5 test match series against India पर Champions Trophy. उन्हें वहाँ पे भी कप्तान रहेगा 50 ओवर का. Then Ashes भी रहेगा. So there will be a time maybe he gets injured, but you'll have to. Strategy from Pat Cummins. भाई bowling क्या डाल रहा था उन्हें 13 ओवर तक. ये देखिए कैसा scores रुका रहा था. And freedom दे दिया अभिषेक शर्मा को, नीतीश रेड्डी को, इन लोग को सबको freedom दे दिया. ये टाइम तो SRH मार के रहेंगे. News was also going around that Aqib Javed, who is now confirmed as conveyor of selectors, wanted Agha Salman as white ball captain, but was told to wait until after CD to make that change. Yeah, I'm sure there was. I mean, Aqib Javed has already, said a few strong things. I think he's taken that stance. Keep high. We have to improve Pakistan cricket, and if we need to take big calls, we need to take big calls. And he's not shied away from that. I think that's been great from him. Again, unfortunately, politics, man. That's what it is in Pakistan cricket. I think everyone's eyes is on RCB, so that वो क्या changes लाएंगे, किस तरीके से ट्रॉफी जीतने की chances करेंगे, कौन से players को लेके आएंगे, क्या चीज अब तक क्या problem आया. हाँ, RCB में अगर retentions करना है, I think विराट कोहली 1 है, सिराज 2 है. कैमरन ग्रीन को नहीं करेंगे because injured है. मैक्सवेल को शायद कर सकते, शायद या नहीं, like आधा right. उससे अलावा I don't know, पाटीदार I don't think so, विशाख I don't think so, फाफ I don't think so. So I think 2 to 3 retentions करेंगे. That means they'll have a good big purse going into the IPL. CSK में एक बॉलर है, क्या नाम है उसका? देशपांडे. पाटीराना. I think चेन्नई उसको ले लेंगे. चेन्नई अगर उन्हें छूट गया ना, वो जनों का फायदा हो जाएगा. उन्हें अगर छूट गया तो वहां से नेक्स्ट मिलेगा. अच्छा बोले रहे. चेन्नई पाटीराना, ऋतुराज कैप्टन, they'll retain him, you think? Yeah. लोगों तो लेते भाई. फिर मे बी शिवम दुबे. दुबे को भी कर सकते रिटेन. Do you guys celebrate Diwali? Bro, happy Diwali. I don't know when is Diwali. Happy Diwali. It's on 31st. It's on 31st. Happy Diwali. Happy Diwali. Celebrate बोले तो we just our friend crackers and all. Our friends celebrate, so we just you just go and see, watch, enjoy. Yeah, we enjoy the festive season. We're in India right now, so we're enjoying the fireworks and everything like that. Yes, so I think in that, what was I saying? Mumbai Indians, यहाँ पे problem है भाई. यहाँ पे मुंबई इंडियंस में प्रॉब्लम है. यहाँ पे तो कैप्टनसी की लड़ाई है यार. भाई किसको रिटेन करेंगे आप? किसको रिटेन करेंगे? 5 ऑप्शन है आपके पास.
अगर आप 5 लिए तो हार्दिक 75, हार्दिक पांड्या एक, हाँ। गया 18 करोड़, बोल हाँ। दूसरा। रोहित शर्मा। ओके 18, हाँ। हाँ हाँ। ओके, गए 36, हाँ। बोलो। और कौन? सूर्य कुमार यादव हाँ वो भी गए 14 करोड़, हाँ। आता है ना 14 करोड़ में। आया था। तो कितना हुआ? 50 करोड़। हम्म। Of course, sir. Of course. We'll definitely meet. Let us know where you're based. After a few weeks, we'll definitely try and क्या बोलते हैं, so meet up with you as well, like in India for sure. Yeah. Where do you stay, man? Karthik. Karthik. Yeah. Is you wanna call? Take call. You can handle it 5 minutes. I don't think so. We can talk about the Yeah. retention. Mumbai का पूछो लोग। Yeah. So guys, बॉम्बे का जो टीम है उसके पूरे प्लेयर्स का रिटेंशन में 1 मिनट। मुंबई इंडियंस player city built by Soviet Union. I'm currently in Chhattisgarh. Okay. City built by Soviet Union. Okay, that's nice. ओ भाई आप ऑल द वे आके छत्तीसगढ़ पे आके डिनर करना पड़ेगा हम लोगों को. Why don't you come to Hyderabad and do dinner here, man? And when is the Diwali there? It's on the same 31st? Whoa. Yeah. So Rohit Sharma, originally from. Oh, that's nice. That's very nice. Yeah, basically, I heard that it's on 1st is November, but like many of them are celebrating on 31st. So Rohit Sharma, what about Ishan Kishan? So guys, you Karthik, you tell me, man. बॉम्बे इंडियंस से कौन कौन किस को रिटेन करना चाहिए? Which players do you want to be retained from Mumbai Indians? Just comment. Let me see. So the Rohit Sharma, Surya Kumar Yadav, then Avik Desai, Tilak Verma, ईशान किशन. या इस बार 2 दिन. या आई डोंट नो ब्रो. Might be, yeah, because here this 31st, I guess. Rohit Sharma, Hardik, Bumrah, and Ishan. Okay, 1 minute.